इनवाइट करना चाहेंगे मेजर जनरल राजन कोचर साहब, बीएसएम पीएचडी भी आपने की है, और एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी साहब और कमांडर अशोक बिजलवान जी, आप तीनों को तालियां आप सबकी तरफ से खूब सारी बजनी चाहिए। इस सेशन में ऊर्जा तो है ही है, लेकिन ऊर्जा के साथ साथ देश के लिए अपने आप को समर्पित करने का एक संकल्प है। और जब हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ चिंतन और मंथन और ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, तो उसमें ये अवसर हम सबके लिए बड़ा खास है। रिक्वेस्ट करूंगा इस सेशन को प्रखर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं निवेदन करूंगा पैनल कंसोल से, आइए, क्योंकि हम जब राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान जब भी सुनते हैं तो एक नई तरह की सोच, जज्बा, देशभक्ति की भावना हमेशा हमारे अंदर और ज़्यादा उत्साह के साथ उछालती है, अपने हमें प्रोत्साहित करती है। आपकी करतल ध्वनि एक बार तालियां आप सबकी तरफ से ज़रूर होनी चाहिए। इस कार्यक्रम में बहुत दूर दूर से लोग और अलग अलग क्षेत्रों के लोग शामिल हैं, और उससे इस कार्यक्रम की आभा भी बढ़ी है, गरिमा बढ़ी है। मिस्टर हरेंद्र सिंह तोमर जी, ये कारगिल योद्धा हैं, 1999 में देश के लिए इन्होंने युद्ध किया था, और उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ। आजकल जीएसटी ऑफिसर हैं ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में उनकी पोस्टिंग है। वहाँ से हमारे निवेदन को स्वीकार करके आप सभी इस कार्यक्रम में आए हैं। देश के लिए एक चिंतन, एक सोच को लेकर आए हैं, उसमें अपनी भूमिका निभाने का संकल्प भी है। आइए तोमर जी, हरेंद्र सिंह तोमर जी, और उन्हें यहाँ पर माननीय जो सम्मानित अतिथि हैं वो मेमेंटो भेंट करके उनका आभार व्यक्त करेंगे। हरिन जी, थैंक यू डिग्निटरीज का, और रिक्वेस्ट आपसे करूंगा एक बार आप सभी अपने स्थान पर खड़े हों, क्योंकि हम राष्ट्रगान के साथ इस विशेष सत्र का आरंभ करेंगे। राष्ट्रगान प्लीज, टेक्निकल टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि राष्ट्रगान प्ले करें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जैसा कि सुबह विंग कमांडर बख्शी साहब कह रहे थे कि जब तक देश रक्षा को क्षेत्र में मजबूत नहीं होगा तब तक शांति नहीं होगी, शांति नहीं होगी तो विकास नहीं होगा, आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। ये सोच पिछले कुछ वर्षों में हमने देखी और उसका सुपरिणाम भी हम देख रहे हैं। आज भारत जितनी मजबूती से उन तमाम अपने पड़ोसियों के प्रति जो शायद उनके लिए कभी अक्सर खतरे की घंटी के रूप में काम करते रहे हैं, आज उनको सचेत करने का, उन्हें चैलेंज करने का एक साहस, एक सम्मान का भाव देश में जागा है। और उसी तरह से रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आज भारत जहां पहले आयात करता था, आज निर्यात करने की क्षमता को विकसित कर चुका है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो रक्षा की टेक्निकलिटीज से जुड़ी हैं, और आज ये उस बारे में हम सबको ज्ञान मिलेगा, दिशा भी मिलेगी। तो मैं एक बार पुनः सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए हमारे प्रेसिडेंट और एडिटर इन चीफ विजन टीवी वर्ल्ड प्रणव प्रखर से मैंने रिक्वेस्ट करूंगा इस सेशन को, इसकी शुरुआत करें और हम सब ध्यान से इन चर्चाओं को सुने। ओवर टू प्रखर। थैंक यू सर। आई थैंक Commodore Ashok Bijawal Saab for such a short notice intimation, and we are having the best of the panel I can ever dream of, sir. Sir, it is also important to thank all my guests who have been here today since morning. It is also important because हम message communicate कर रहे हैं. We are the communicator who are there. But क्या we are communicating with the experts? Are we communicating from the horse's mouth? And here I have the best of the talent, best of the people who are guarding ourselves.
we can never thank them for what the service that they have done. We can never thank them for the teamwork that they have shown, for what they have taken India to. And India, after 75 years, if we are cherishing it, it is big. You all three represent all the three forces. We thank you, ever so thank you. And the most important is the effort that you all put, the representation that the organizations that you have service, it is unbelievable. They are the best in the world. They are the best. We all are proud. Whole country is proud of you. First, let me talk to Major General Rajan Kochar. Sir, important is, where are we? I'm not talking about what is in the news. I'm talking about what will be making the news. To be the 5th largest economy, it is important that we are secure. To be the 5th largest economy, it is important that hum atmanirbhar ho sakein. To be the 5th largest economy or moving up the ladder, it is important where we are heading. There are 3 important points. I'll leave that to you, sir, to make the opening comments. That we can make the format of this, that first the opening comment from all the 3, and I don't think there will be anything left, but then if need be, I'll come with few of the input that I may seek from you, sir. Major General Rajan Kochar, please. Good afternoon to everybody, and मैं इस प्रखर जी का आभारी हूँ कि आज इस मंच पर, और ये एक ऐसा मंच है जो देश की एकता के लिए काम करता है, और फ़ौज में मैं 37 साल देश की सेवा की है, और रिटायर होने के बाद 2018 से मैं ऐसे संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ जिसमें हम यूथ को अपने साथ लेके चल रहे हैं और अपने देश को मजबूत कर रहे हैं। नेशन फर्स्ट हमारा नारा है। इस नेशन फर्स्ट को हम कैसे हासिल करेंगे? अब जो प्रखर जी ने बताया कि सच्चाई से बात होगी, आज आपके सामने सच्चाई सामने रखी जाएगी, और आप लोगों ने ही इसको तय करना है कि हम आज कहाँ पर हैं और हमको कहाँ जाना है। ये जो महोत्सव है आज, और इसके मद्देनज़र फ़ौज के बारे में बात करने का आज मौका मिला है मुझे। डिफेंस एट 75 इयर्स, 75 साल में हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं और हमको आगे जाना कहाँ पे। 1981 में फ़ौज में मेरा कमीशन हुआ था, और जो AVM OP तिवारी साहब यहाँ पे बैठे हैं लेफ्ट में मेरे, हम दोनों 16 साल के थे और एक साथ नेशनल डिफेंस एकेडमी में ज्वाइन किए थे, और हम दोनों एक ही सीनियरिटी के हैं, और एक ही स्क्वाड्रन में नेशनल डिफेंस एकेडमी में लीमा स्क्वाड्रन में हम 3 साल साथ रहे। और अब ये मंच पे हम साथ हैं। तिवारी साहब एयरफोर्स के बारे में बात करेंगे, मैं आर्मी के बारे में बात करूंगा। कमांडर अशोक जो मेरे साथ इधर बैठे हैं, ये भी लीमा स्क्वाड्रन से हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी के। तो ये एक कोइंसिडेंस मैं मानूं या मैं इसको प्लान मानूं कि तीनों जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के हम आपके सामने हैं, हम इकट्ठे नेशनल डिफेंस एकेडमी में एक ही स्क्वाड्रन के हैं। तो ये एक बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है ये इसको देख के कि हम तीनों आज इकट्ठे हैं। फौज आज लद्दाख के बॉर्डर पर है, और मैं आपको इतना आश्वासन देना चाहता हूँ देशवासियों को कि जो इक्विपमेंट, जो तैयारी आज फौज की लद्दाख के ऊपर है, आप निश्चिंत रहिए, चाइना को हम अंदर नहीं आने देंगे। कुछ भी हो जाए, एक जो फौज का जवान है आज, वो 10 चीनी जवानों के बराबर है।
जो उसकी वीरता है, जो उसकी बहादुरी है और उसकी लड़ाई करने की क्षमता है। अगर उसके हाथ में एक डंडा भी दे दिया जाए तो वो 4 चीनियों का उसके साथ मुकाबला कर सकता है, और उसने किया है। बिकॉज आपको याद होगा लद्दाख में एक ट्रीटी है हमारी चाइना के साथ, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की, 1993 की ट्रीटी है ये, जिसमें ये लिखा हुआ है कि हथियार इस्तेमाल नहीं होंगे। वो चीज़ को ये गवर्नमेंट ने आके ख़त्म किया है। बिकॉज एक फौजी अपने हथियार से जानता है, जैसे कि एक जो महिला होती है वो अपने आभूषण को सबसे ऊपर मानती है और अपने मंगलसूत्र को सबसे ऊपर मानती है, तो फौजी के लिए उसकी राइफल उसका मंगलसूत्र है, और उस राइफल के साथ वो अपने दुश्मन का मुकाबला करता है। आज AK-203 अमेठी में मैन्युफैक्चर हो रही है, आप सबको पता होगा, मेक इन इंडिया है ये एक नया भारत है जिसमें टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है। ना कि AK-203, आज रॉकेट लॉन्चर कार्ल गुस्ताव की मैन्युफैक्चर जो हमारे इंडियन आर्मी में 1984 से है, वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है। आकाश मिसाइल ले लीजिए, ब्रह्मोस ले लीजिए, आप अग्नि मिसाइल ले लीजिए, और आप अर्जुन टैंक जो मार्क 1 अल्फा है। आज डिफेंस मिनिस्टर ने एक ऐलान किया है कि 2 आर्मर्ड रेजिमेंट अर्जुन टैंक की भारतीय फौज में इंडक्ट की जाएंगी। तो आज का ज़माना जो हमने यूक्रेन की लड़ाई में देखा और आप सब ने देखा कि आज की लड़ाई जो हमने 71 में लड़ाई लड़ी थी उससे अलग होने वाली है। ये लड़ाई साइबर की तरफ जाएगी, स्पेस की तरफ जाएगी और हाइब्रिड वॉरफेयर की तरफ जाएगी, ग्रे जोन वॉरफेयर की तरफ जाएगी। लड़ाई से पहले आपको पता नहीं चलेगा कि आपका दुश्मन कौन है। अगर एक साइबर अटैक अगर हमारे ऊपर हो जाएगा, हमारे बैंकिंग सिस्टम अगर ख़त्म हो जाएंगे, हमारे जो जितने भी रेलवेज हैं अगर वो काम करने बंद हो जाएंगे, उनके सिग्नल्स बंद हो जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी फ़ौज की मोबिलाइजेशन कैसे हो पाएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी एक नेशनल साइबर एजेंसी का गठन किया है, एक स्पेस एजेंसी का गठन किया है, जो पहली बार प्राइवेट सेक्टर को दी गई है। प्राइवेट सेक्टर को पहली बार इस गवर्नमेंट ने शामिल किया है आत्मनिर्भर भारत में, और ये एक बहुत बड़ी बात है। बिकॉज मैं फौज में 37 साल मैंने जो स्थिति देखी है फौज की इक्विपमेंट की, फौज के एमुनिशन की, और जिस तरीके का एमुनिशन हमको मिलता था और जो कई बार कामयाब नहीं होता था, हमने एमुनिशन अगर फायर किया तो वो एमुनिशन अपने टारगेट तक नहीं पहुंचता था। वो सारी स्थिति ऑलरेडी बदल हो चुकी है। आज आधुनिक हथियार फौज में आ रहे हैं। आपको याद होगा एक इंडिया फोर्स करके कंपनी है जहां से हमने ड्रोन लिए हैं, और ये स्विच ड्रोन है जो अमेरिका के पास है। ये ड्रोन लद्दाख में आज डिप्लॉय हुए हैं, और ये पूरा जो ISR कैपेबिलिटी जो हमारे पास फौज में नहीं थी, जिसको हम इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस बोलते हैं, ये कैपेबिलिटी आज फौज के पास है। एक कमी थी हमारे पास लाइट टैंक की, वो कल्याणी ग्रुप ने और लार्सन और ट्यूब्रो ने दोनों मिलके एक टैंक अभी इसको बनाया है जो ऑलरेडी हथियार में डिप्लॉयड है। तो इस प्रकार से आज की ये न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज राजनाथ सिंह जी की स्टेटमेंट मॉर्निंग में आई थी। 928 आइटम हमारे इंपोर्ट लिस्ट से हटा दिए गए हैं। पहले 401 आइटम थे, अभी ये 928 आइटम और ऐड कर दिए गए हैं। तो आप लगा सकते हैं तकरीबन 1400 ऐसे आइटम हैं जो भारत में मैन्युफैक्चर होंगे, जिनका मैन्युफैक्चर मेक इन इंडिया से अभी हमारा नारा होना चाहिए मेड इन इंडिया। बिकॉज मेक इन इंडिया का ये मतलब होता है कि बाहर से आइटम आएगा और यहाँ असेंबल होगा, पर मेड इन इंडिया का जो नारा है अभी वो उसको हमको आगे लेके जाना है। और
जितने भी हमारे आधुनिक हथियार हैं आज जो फौज में हमारे पास क्षमता है, हमने अपने उसके ऊपर अपनी ट्रेनिंग कर रखी है। अभी आपने यूक्रेन में देखा होगा और इसको रशियन आर्मी को खास तौर पे देखा होगा कि जो भी उनके टैंक्स थे उनके ऊपर ट्रेनिंग उनकी सही नहीं थी, इसी प्रकार से काफ़ी उनके टैंक्स नष्ट हुए हैं। हम जो ट्रेनिंग करते हैं, हमारे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और एयरफोर्स की इंस्टीट्यूशंस हैं, नेवल की इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है 55 कंट्रीज़ के कैडेट्स ऑफिसर्स हमारे देश में आके ट्रेन करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी ट्रेनिंग की क्षमता कितनी हाई दर्जे की है। इफ़ यू स्वेट इन पीस यू विल ब्लीड लेस इन वॉर, ये स्टेटमेंट आपने सुनी होगी। तो हम अगर अपना पसीना आज अगर बहा रहे हैं, हमारे जवान अगर इसको बहा रहे हैं और ये क्षमता रखते हैं, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आने वाली लड़ाई में दुश्मन हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। पाकिस्तान का हशर आपने ऑलरेडी देख लिया है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान आर्मी की क्या स्टेट है। मैंने एक स्टडी की थी 2018 में, मेरे आर्मी कमांडर ने मुझे बोला था एक स्टडी करने के लिए कि आप हमको बताइए कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई होगी तो कितनी देर तक चलेगी और पाकिस्तान इंडियन आर्मी के साथ कितनी देर तक टिक पाएगा। मैंने 2 महीने ये स्टडी में लगाया और मैं आपको एक ब्रॉड रिजल्ट स्टडी का बताता हूँ। पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है वो खाली 7 दिन है हिंदुस्तान से लड़ने के लिए। आज अगर पाकिस्तान के साथ हम लड़ेंगे 7 दिन तक ही पाकिस्तान लड़ सकता है, बिकॉज उसके पास उतना ही एमुनिशन है, उतना ही उसके पास फ्यूल है, उतना ऑयल है, उतना लुब्रिकेंट है, उतने हथियार है। उनकी 70% हथियार अमेरिका से हैं जिनके स्पेयर्स उनके पास नहीं है। चाइना के हथियार उनके पास 30% है, पर उस हथियार की कभी टेस्ट नहीं हुआ है लड़ाई में, और इसीलिए हम नहीं जानते वो हथियार वो इसको फंक्शनल करेंगे या नहीं फंक्शनल करेंगे। तो इस प्रकार से मैं अपना ओपनिंग जो रिमार्क, शायद मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, भावुक हो गया शायद मैं, तो मैं इसीलिए आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आज आप निश्चिंत रहिए, आपकी फौज आपके साथ है। जय हिंद। आदरणीय, आपने ज़्यादा टाइम तो बिल्कुल नहीं लिया, हम तो घंटों आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन शायद समय एक ऐसा चीज़ है जो सबको रोकता है। माई क्वेश्चन टू यू विल बी, I mean, if you may allow me that, do we take a opening comment, or you allow me to ask a question, because we can cover other parts, because sir has already covered major part as India. But now we are going into the specifics, and this could be, how do we secure our seas? That also means how do we secure our seas outposts? That is important. Where are we? How are we? Because China is always on the prowl, and at the same time, Diego Garcia and other places are not too far behind. We have talked about, is in detail, in this deliberation, our next door neighbor on the west we have talked, but the bigger picture is up north. Okay, seas are the most important part of the world. 70% of the earth is actually sea or ocean. Then, as you see, almost 90% of the world trade happens through the seas. Almost 90% of the world trade happens through the seas. Now, India is located by virtue of its location. India is at the epicenter of the world trade. Most of the trade which is passing from the Mediterranean via the Suez Canal and eastwards, all passes from the Indian Ocean, and that makes India a very, very important cog in this entire wheel. So now, as Pranav asked me, how to secure our seas now, and from our western neighbors as well as our northern neighbor. So luckily, by virtue of the geography, we are lucky
that our northern neighbor has to go through a long route if it has to approach India from the sea route. Still, nothing can be discounted in war because, as we know, our northern neighbor is actually building. It is by the number of assets. Now it's already the #1 navy in the world, and soon in other aspects also it will take the lead. So, so we have to be prepared so that any excursions which with China, if it were to take one through the southern route, through the circuitous southern route, we should be prepared for it, and we are preparing for it. And I must laud the top brass of Indian Navy that they have been constantly working on these threat perceptions and keeping ahead of the times, projecting their requirements to the government, getting those sanctions by giving logical explanations, and then going on to build those assets and operate those assets. Like if you see, we have our P-8I squadrons of the maritime reconnaissance aircraft, and we have slowly built up the inventory, and I believe we are going to further add to that, so that we can keep a close look on the approaches to the Bay of Bengal and further down south. Then we are constantly working on adding the capital warships, anti-submarine warfare ships, destroyers, and we have recently commissioned our first indigenous aircraft carrier. We are working to enhance our submarine fleet. Unfortunately, that has been a kind of dampener because of certain reasons which were not in our control, and there were some technical issues involved. So we are a little behind in that. Rather, I would say we are quite a few years behind in that. But hopefully, things are going to turn around, and our submarine fleet will also be enhanced in the times to come to the requirement levels that we need. So, and secondly, not only these, from the defense perspective, India has got about more than 7,500 kilometers of coastline, if you include the island territories as well. And we have close to about 1,400 or so islands as well, to which we have to, which Navy has to, protect and safeguard. And they're all lying far off from the mainland. We have about 2 million square kilometers of exclusive economic zone that we need to protect. So these are the things that I said, that we are constantly, the Navy is, Indian Navy is constantly upgrading its potential. It's constantly adding its assets that are required to safeguard all these assets that India has, maritime assets. I think we are pretty much on the right track. Only thing is that I think we need to speed up a few things a little and catch up where we are lagging. Sir, I have a small question. Sometime back, a year or so back, I was in one of the research ship of Goa. And you have already talked about the distance and the area that we have. The question is extracting rare earth matter, rare earth materials, and the question is how to harness methane. Because if we can harness methane, we will be energy surplus. We don't need any additional input coming from anywhere. But the bigger question is also harnessing the rare earth material, because India is becoming hub on that. You said use the word securing, but I'm using the word harnessing. The only difference that I want your attention on, sir. Okay, so I think about a couple of years back, Indian government has come out with the deep ocean policy, and as per that, we are developing assets to explore the seabed
right up to 6,000 meters below below the sea level, and I think we are on track. Unfortunately, the thing is that we have International Seabed Authority. It's a UN organization that it has given us, I think, rights to about 75,000 square kilometers for exploration of the seabed. But right now only exploration is allowed, mining is not allowed because of the environmental concerns that that they have, that the UN has. If you go for a mining on the ocean floor, the what effect it will have on the environment and the ecosystem and the marine life. So all those studies are being conducted, and only after these factual reports are out with the findings, then only the International Seabed Authority is going to allow these countries to actually extract, or should I say exploit the natural resources that lie at the sea bottom. Till that time, we are only doing some exploration, and we are just analyzing whatever stuff we get from there to find out what kind of minerals or like you said, methane, etc. we can extract from there. That's what it is. And also on the South Pole side, what is happening and how India could benefit. We all know that we have a station in South Pole and so on and so forth. And sorry, one more thing. Right now, the technology that is there to extract, that is prohibitively costly. So any thing means any industrial process or to succeed, it has to be sustainable. That means it should be cost effective. So unless that happens, extracting minerals or methane from the seabed is going to be a far-fetched dream as far as we can think of right now. What you call a dream, I call it an opportunity. And yes, sir, please. You have spoken about methane. I would also like to bring in lithium into this context today. Today's news is that I was reading in the papers in the morning that we have discovered lithium in one of the regions in India. And lithium is an important ingredient when we carry out manufacture of uranium. And when we look at energy, as far as our country is concerned, because we need to be energy sufficient. यूक्रेन की लड़ाई में हमको एक सीख मिली है, जो देश अपने कमोडिटीज़ को अपना कंट्रोल अगर कर सकता है, जिस देश में सारी कमोडिटीज़ मौजूद रहती हैं, वो देश अगर लड़ाई पे भी चला जाएगा तो उसकी इकोनॉमी पे फ़र्क नहीं पड़ता है. सो दिस इज़ अ लेसन लर्न फॉर अस. वी हैव टू इम्प्रूव आवर ओन माइनिंग स्ट्रेटजी. आप कोल ही देख लीजिए. वी हैव सो मेनी माइनिंग opportunities for coal, but still we are importing coal because it is cheaper to import than to mine. Commander साहब ने यही बोला था that we have to devise methods in the country to manufacture things cheaper and of a better quality. जब ये दोनों चीज़ें price और quality और quantity तीनों इकट्ठी हम एक चीज़ में हासिल करेंगे, तभी हम अपने आप को आत्मनिर्भर बोल पाएंगे. Now I am moving forward to Air Vice Marshal Om Prakash Tiwari ji. He was awarded AVSM in 2018 and VSM in 2015. We all look God up on the sky. We also look to you. You are the last one to speak, sir. We look up to you up in the sky. But most important is how we will go from 1.5 Mach to 2 Mach, 2.5 Mach. That's the question, eternal question that has been Tejas and all that, where we head, how we move up, how we develop the technology. 1.5, 2 Mach, 2.5 Mach, and where the world and USA and China are. Okay, thanks. Manav, I'll tell you a little bit of Air Force. And plus, I would invite more questions from audience. My discussions will not be one way. I'll welcome answer questions so that I can explain something. Let me tell something about Air Force. 1962 war.
If Indian government has decided to use Indian Air Force, the result would have been different. Indian Air Force, because of geographical location, हमारे पास कुछ advantage हैं. हमारे जहाज full armament लेके एयरबोन हो सकते हैं, 10 मिनट की फ्लाइंग टाइम पार करके चाइना के बॉर्डर को डिस्ट्रॉय करके वापस आ सकते हैं. जबकि ये फैसिलिटी चाइना के पास नहीं है, बिकॉज चाइना को जो एयरक्राफ्ट एयरबोन होंगे वो हायर एयरफील्ड से होते हैं. they can carry only 50% of the load capacity. They have to fly for 30 minutes to 45 minutes to reach the border and go back. So Indian Air Force always had an edge. In 1962, before the war commenced, Bakshi sir would have commenced and we'll cover it later on when he was. We had Wing Commander Nath. He just expired at 92 years of age about 6 months back. He has carried out a recce sortie over China along with the border for about 10 days. Every points, every locations, every strategic location, सबका नक्शा गवर्नमेंट के पास था. लेकिन उस समय गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति नहीं थी कि हम एयरफोर्स यूज करें. अगर एयरफोर्स यूज कर लिए थे तो जो धब्बा हमारे डिफेंस फोर्सेस पर लगा है, जिसको हम अभी भी नहीं धो पा रहे हैं, ये इसकी अपॉर्चुनिटी, इसका मौका कभी भी नहीं आता. हम चाइना को हमेशा ख़त्म कर सकते थे. चाइना का जो मेन डर है, चाइना डेवलपिंग कंट्री है, चाइना के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, लेकिन चाइना जैसे भी जनरल साहब बता रहे थे कि आर्मी वाइज हम बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, बट दे कैन नॉट टेक चांसेस because of Air Force advantage. Air Force was always advantage and you can counter them. This point I will clarify. If somebody asks me to clarify again, I'll say. Now coming to the development of the next 10 years, 20 years for Air Force. Till now, all the Air Force aircrafts, all the equipments, all the instruments were imported. Times we have seen that aircraft is ready, but aircraft cannot get airborne just because of short of one spare part. That spare part will cost so much you cannot go and convey the load. Now remember, I have seen the time when the spare part could have been manufactured even in Ludhiana. We are not allowed to do so because government has different indications. Because moment you start manufacturing something in India, government will, I don't know, I'll not say, I'll not make any comment on this thing, but they didn't have that willpower that we should start. I'll tell you one more thing. After 1947, there were unserviceable Tufani aircrafts, about 40 of them parked in Kanpur. It was the initiative of Air Force who made those aircrafts serviceable. We cannot call it Make in India or Made in India, but those aircrafts which had been dumped, not considered fit flying, were utilized and 2 squadrons were formed. So Make in India, Made in India, this force, Indian forces, Indian people always had in their mind. But unfortunately, we didn't get support from the government. That is the reason, even if you're surprised to know that first aircraft was made in India by Indian Air Force, an engineer of Indian Air Force, who later on retired as AVM Sani. HAL was made, but HAL was never allowed to progress. Aircrafts have been lying, you have seen for the ages, nothing could move. Now the aircrafts have started coming up. Tejas, we know we are making aircrafts, we cannot make the best, but even if you can achieve the 95% of efficiency and larger in number, you can counter anybody. So we have to appreciate the efforts of Indian Army officers, senior officers, Air Force officers, naval officers, who has always bent of mind that we have to go for Make in India, but they are not allowed to do so. Now today that 708 parts or 900 parts have been declared. These all works have been done for the years and the ages. We have been working on it, finding out what can be made in India. But now it is fructified, it is coming on the, now we can see on the face. Now things are coming up. Now with us, this will make India very strong, and Air Force you don't have to invite. Only fact or aspect which require little bit of more research, and the government is, and people are doing it, is the aero engines. That is the only little bit of, and I'm sure our scientists or engineers in consultation with the Air Force are going to achieve that. And future is very bright. We don't have to bother about our new adversaries, whether Pakistan or China. And India by nature, we don't have an expansionist attitude. We are there only to guard ourselves. For that, Navy is sufficient enough to guard our waters
and borders. And borders at China and Pakistan, they are scared. They cannot take chances with us. They can play around, but they can never take chances with us. Any other questions, anything, clarification you wanted to know? Now, space. Should I ask you about some space also? You ask some? Yes, please, if Yes. you can. Okay. Space has become a very important aspect. See, the satellite, General Kocher also covered in the evening, satellites has to play a major role. So many satellites will be launched, different type of satellites. This I'll cover in the part of your CH4 also. See, remote sensing is very important. What point was that, what you have got in South Pole, what you have got in sources, it is better to have mapped and keep the data with us. When you require, we can explore them and utilize them. That will be space applications for this. We are using it for banking, we are using it for remote sensing. Now, other thing, what is going to be used in for the terrorist activities. In this aspect, in this field also, India is quite ahead. Only doubt on this thing is anti-satellite activities. Where can you destroy a satellite or not? So far, 3 countries had done it. India, Russia, and China were ahead. Sorry, USA, Russia, and China. India also achieved it. We achieved it without any load. We achieved it only by striking a missile without any payload and destroying it. It means it is a deterrent. We have got the deterrent. So nobody can take chances with us to destroy your satellite because India is also capable of destroying the satellites. Sir, thank you, sir. That's a very, very latest update, and most important is that what all 3 gentlemen has said us is that India is secure. That it begins there, that's the full stop, and India is secure, that's the end. Prelude and action, foreground and background, all implementing together. We all know that we are in safe hands, courtesy all the 3 forces. And we also want to ever be grateful to all the 3 defense forces who have done amazing work. क्योंकि न्यूज़ एक चीज़ है, व्यूज़ एक चीज़ है, न्यूज़ कब व्यूज़ बन जाती है, व्यूज़ कब न्यूज़ ओवरलैप हो जाती है. As a journalist, we keep playing around that because TRP, VRP तो ठीक है, Vision TV has broken all that. Let me tell you all that. We don't believe in TRP, we believe in what is content. Content is king, and content which we are getting right from morning here. I have no words to thank you all. Gentlemen, you all 3 have been wonderful and patiently waited. We have been running a little late. I'm sorry that you all had to extend your stay, but we all cherish for whatever you all have said today. We all are very, very proud of you. Thank you very, very much. We'll have a presentation with Janenji around, and then we will have the national flag, where the national song, national anthem, which will be giving goosebumps to all of us. We are so proud of 3 of you. We just wanted to thank you for such a short notice, but making it to it today. Thank you very, very much, gentlemen. पवन कुमार आनंद जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आ जाएं और प्रणव प्रखर, आप दोनों मिलकर हमारे जो पैनल में शामिल बहुत ही विशिष्ट डिफेंस सेक्टर की ऐसी विभूतियां जिन्होंने रण क्षेत्र में अपने कौशल का, अपने शौर्य का तो परिचय दिया है, लेकिन आज देश में रक्षा के क्षेत्र में वे लगातार अपना योगदान दे रहे हैं. आइए सबसे पहले आपकी करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों, मेजर जनरल राजन कोचर साहब, उनका बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम में, इस सेशन में पधारने के लिए. थैंक यू सर, थैंक यू. एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी साहब को भी एक प्लांट और मेमेंटो भेंट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा. आप सबको देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है और एक बात का विश्वास तो ये होता ही है कि जो फौजी है वो कभी रिटायर नहीं होता. वो कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अपनी ऊर्जा के साथ हम सबको प्रेरित करता है. और कमांडर अशोक विजिलवान साहब, उनको भी अभिनंदन उनका करने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए निवेदन करूंगा मैं. और देवियों सज्जनों, आखिर में, इस सेशन के आखिर में आप सबसे एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हों राष्ट्रगान के लिए, और इस राष्ट्रगान के साथ इस सेशन को हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे और अगले सेशन की तरफ बढ़ेंगे. राष्ट्रगान के लिए आप सभी खड़े हो प्लीज.
जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे सभी इस सेशन के पैनलिस्ट का आभार व्यक्त करते हैं। मेजर जनरल राजन कोचर जी, एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी, कमांडर अशोक बिजलवान, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। जय जय गंगे जय जय गंगे नमामि गंगे। नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे। तू युग युग से बहती आई, तूने ही हमको पाला है। तेरी उंगली पकड़ चलना सीखा, जीवन तूने ही संभाला है। तेरा कर्ज चुकाना है हमको, कर्तव्य निभाना है।